Hello everyone, welcome to Aitareya Institute and our Geography Standard Book series. I am Aditya Singh, and in this series we will build a strong conceptual understanding of geography through standard textbooks and an exam-oriented approach. So whether you are preparing for UPSC or any other competitive exam, this series will help you strengthen your fundamentals. So without any further delay, let's begin today's discussion. तो कल हमने जहां से छोड़ा था, we'll be picking up our discussions right from here. So yesterday we were discussing National Tiger Conservation Authority. So it was constituted in 2006 under which act? है ना, हमने बताया था एक अमेंडमेंट हुआ था टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1973, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. उसमें अमेंडमेंट लाया गया था, उसके थ्रू NTCA was constituted. So this is responsible for policy formulation. आपके पॉलिसी बनाए जाएंगे. ठीक. मॉनिटरिंग, आपके जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में उसको मॉनिटर करेगा NTCA. ठीक है. बाकी हमने इसका एक और देखा था रोल, क्या कौन सा इंपॉर्टेंट रोल कंडक्ट करता था? टाइगर सेंसस. टाइगर सेंसस आफ्टर एवरी 4 years. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. फंसाना होगा आपको, सिंपली 4 years का 5 years कर दूंगा. ठीक है. तो ओवरसीज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक कंजर्वेशन, फंडिंग भी करता है और प्रोटेक्शन मेजर्स, ये सब चीजें NTCA देखता है. कोऑर्डिनेट्स विद स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है. किस लिए? टाइगर हैबिटेट की नोटिफिकेशन के लिए. एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से टाइगर हैबिटेट्स नोटिफाई किए जाएंगे. इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक. सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB. ठीक है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 2007 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, आपका NTCA भी एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है. ठीक है, और इसको हेड कौन करता था NTCA को? एक मिनिस्टर. कौन सा मिनिस्टर है ना? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट मिनिस्टर. ठीक. लेकिन एक चीज और हमने डिस्कस की थी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. इसको कौन हेड करते हैं? इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए. तो ये कॉम्बैट करने के लिए है वाइल्ड लाइफ क्राइम, है ना. सारे जितने भी क्राइम होते हैं वाइल्ड लाइफ के, जैसे कि पोचिंग हो गया, आपका इलीगल ट्रेड हो गया, उसके लिए ये एंटिटी बनाई गई है. सेकेंडली, कोऑर्डिनेट्स विद इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है. क्यों कोऑर्डिनेट करता है? ताकि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, जो क्रॉस बॉर्डर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है, उसको रिड्यूस किया जा सके. ठीक. वर्क्स अलोंग साइड द ग्लोबल टाइगर फोरम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फोरम है, ग्लोबल टाइगर फोरम. ठीक. एंड इंटरनेशनल बॉडी फॉर टाइगर रेंज कंट्रीज. ठीक है. एक डिस्कशन में हम लोग ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में भी बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार. ठीक है. और एक चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, वो ये है कि ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी. ये स्टैट्यूटरी बॉडी किस एक्ट के थ्रू? कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी तो किसी लेजिस्लेशन के थ्रू इनैक्ट की गई होगी. तो ये किसके थ्रू इनैक्ट की गई है? ऑब्वियसली आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसका अमेंडमेंट किया गया था उसके थ्रू. तो आप ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं. आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर क्यों थी? बेसिकली जितने भी वाइल्ड लाइफ के क्राइम्स हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के क्राइम्स हैं, उनको रोकने के लिए, जैसे कि पोचिंग हो गई. ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ इंडिया तक नहीं है. ये क्रॉस बॉर्डर है ना, जब नेशनल बॉर्डर्स क्रॉस भी कर जाते हैं, क्रॉस बॉर्डर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती, उसको भी रिड्यूस करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एंटिटी है ना, इसके अंदर पावर्स है. ठीक. अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट. ठीक. प्रोजेक्ट एलिफेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टैब्लिश हुआ था कब? 1992 में. ठीक. एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं.
बहुत तरीके की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, बट आपको सिंपली अभी अभी के लिए, आप पॉलिटी में ज्योग्राफी का पोर्शन कर रहे हैं, पॉलिटी का नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली आप ये समझिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करेगी इसके एजेंडाज और ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। ठीक है, ये होती हैं आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म आपका एलिफेंट कंजर्वेशन किया जा सके, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। मेन आइडिया, कोई भी स्पीशीज पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप हैबिटेट बचा लेंगे तो आप इसेंशियली आप स्पीशीज की पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ, नंबर को भी आप बचा ले जाओगे। ठीक। मेंटेनिंग एलिफेंट कॉरिडोर्स, है ना, एलिफेंट्स माइग्रेट करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, इस वजह से सिर्फ उनके हैबिटेट नहीं, वो जहां से पूरे पाथ को माइग्रेट करते हैं उसको भी बचाना बहुत जरूरी है। ठीक, इसीलिए आपने सुना होगा कई बार, अब जो नए हाईवेज बन रहे हैं, जो नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, उनमें कॉन्शियसली इस तरीके की प्रोविजंस डाले जा रहे हैं कि अंडर पासेस, इसमें क्या डाले जा रहे हैं? अंडर पासेस। अगर इन ऐसे सेंसिटिव एरिया से ये हाईवेज या एक्सप्रेस वेज पास होते हैं तो उनके नीचे से अंडर पासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों अंडर पासेस प्रोवाइड किए जाते हैं? ताकि एलिफेंट को रोड, है ना, कोई ऐसा मेन रोड इस तरीके से ना पास करनी पड़े जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो सके, है ना, कोई एक्सीडेंट हो, ये एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। एक्सीडेंट के अलावा आपका जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या एलिफेंट और, है ना, मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको भी रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इसको भी रिड्यूस किया जा सके। तो मल्टीपल सेट ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से ये अंडर पासेस अब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, ज्यादा सेंसिबल हो गए हैं, है ना, टुवर्ड्स कि हम लोग इकलौती स्पीशीज नहीं है जो अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, या इंडिया में रह रहे हैं। तो हमें सबको पूरी इकोलॉजी को लेके मिल के साथ चलना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ फोकस किस पे है? मिटिगेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। अभी हमने जस्ट बताया ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है जितनी भी एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं उन सभी को। ठीक है, ये 15 स्टेट्स में कंडक्ट होता है ना प्रोजेक्ट एलिफेंट। जनरली आंध्रा, अरुणाचल, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब आपकी एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं। ठीक है, और भी बाकी स्टेट्स भी अपना असिस्टेंस रिसीव करती हैं। किसके लिए? एलिफेंट सेंसस कंडक्ट कराने के लिए, उस स्टाफ की ट्रेनिंग करने के लिए, और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसको कम करने के लिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वाले सिनेरियोस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ एक टर्म यूज हुआ है, एलिफेंट सेंसस। तो ध्यान रखिएगा, टाइगर सेंसस 4 साल में एक बार होता है, एलिफेंट सेंसस 5 साल में एक बार होता है, ये ध्यान रखिएगा। और एलिफेंट की पॉपुलेशन, हालांकि आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस रफ फिगर बता दे रहा हूं, लगभग 30,000 है और बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप जो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और एलिफेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, वो आप एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में ज्यादा पढ़ोगे, बट कुछ चीजें एक दो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। कि जो एलिफेंट होते हैं आपके, ठीक है, जो एलिफेंट होते हैं उनको, उनकी जो हर्ड्स होते हैं, उनके जो हर्ड्स होते हैं, उनको लीड कौन करता है? उनको लीड करती है वहां की ओल्डेस्ट फीमेल, ओल्डेस्ट फीमेल। ठीक है, ओल्डेस्ट फीमेल लीड करती है। ये जो सबसे लीडर है ये फीमेल है, ना कि मेल है ना, यूनिक पॉइंट। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसीलिए एलिफेंट्स में क्या कंसेप्ट है? मेट्रियार्क। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सोसाइटी में शायद ये टर्म आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आप इसको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के टर्म्स में भी इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर मैमल्स की बात करें, पूरे मैमल्स की बात करें, तो इनका सबसे लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है। जैसे ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 महीने का।
यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड लगभग 18 से 22 मंथ का होता है। ठीक है, तो एक बार आई थिंक इट वाज 2020 जब ये प्रीलिम्स में पूछा गया था कि रिलेटेड टू एलिफेंट्स का जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट हुआ था? 1974 में। तब ये सैंक्शन हुआ था 1975 ओडिशा में, है ना, ये ऑपरेशनल हुआ था। ठीक, इसका मेजर माइलस्टोन क्या है? इसका मेजर माइलस्टोन फर्स्ट सक्सेसफुल हैचिंग हुई थी घड़ियाल के एग्स की। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में हुई थी 1975 में। तो आपको ध्यान नहीं रखना है, बस एक फैक्ट है। ठीक, इसके बाद आपका कुकरेल लखनऊ में हुई थी इसकी हैचिंग। फिर इसी तरीके से बहुत सारे आगे केसेस बढ़े जहाँ पे आपके रेयरिंग सेंटर्स बहुत सारे एस्टैब्लिश किए गए। नंबर आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ आपका घड़ियाल रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हुआ 1977 में, और 26 घड़ियाल रिलीज हुए थे कहाँ पे? महानदी रिवर में। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके अमाउंट आपका बढ़ता चला गया। लार्जेस्ट सैंक्चुरीज की बात करें तो कृष्णा सैंक्चुरी है और नेशनल चंबल सैंक्चुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पूरे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए आपको यह ध्यान रखना है, स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, और आपको इसमें और कोई फिगर्स नहीं याद रखने हैं। दूसरी चीज कि सैंक्चुरीज कहाँ पे, और सैंक्चुरीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट सैंक्चुरी अगर आप ध्यान रख सकते हो तो ये नेशनल चंबल सैंक्चुरी है, और दूसरा कि ओडिशा एक मेजर सेंटर है ना, घड़ियाल ब्रीडिंग, सॉरी क्रोकोडाइल ब्रीडिंग का। ठीक है, क्रोकोडाइल में भी इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपका घड़ियाल, है ना। बाकी नॉर्मल क्रोकोडाइल पे नहीं, घड़ियाल ध्यान रखना। और जब एनवायरनमेंट आप पढ़ोगे, एनवायरनमेंट में स्पीशीज और ये सब आप पढ़ोगे, तब आप इसको एक्स्ट्रा इस पे ध्यान दीजिएगा घड़ियाल पे। इसकी जो चीजें होती हैं, इसके जो फीचर्स हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा अलग से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ की ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। आपकी सबसे पहले आती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। आपके जितने भी जूज होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? सीजेडए, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये इंश्योर करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। जितने भी जूज हैं इंडिया में, नंबर नहीं ध्यान रखना, जितने भी जूज हैं, so the entire scientific management is taken care by the central zoo authority. It coordinates animal exchange programs and enforces the national zoo policy. Okay, so national zoo policy is enforced by the central zoo authority. Moreover, there are certain points which I would like you to remember with regards to your central zoo authority. Very important point that you have to remember. Now, again, coming back to the point that it was established under which act? So, it is again a statutory body. You have to remember this, that it is a statutory body, and it was established again under which act? WPA, Wildlife Protection Act of 1972. You have to remember this. Okay, so now in the comment section, your homework is list out all the statutory bodies that are created under Wildlife Protection Act. Moreover, you have to also remember its composition. So it has a chairman plus it has 10 members plus a member secretary. So you have to remember the composition of this CZA, the Central Zoo Authority. So it is authorized to recognize, de-recognize and regulate zoos in entire India, along with, yes, obviously enforcing the national zoo policy. So CZA does everything related to zoos. Okay? So zoos are essentially regulated by which act? Your WPA, Wildlife Protection Act of 1972. Okay. Moving on. Next is your National Wildlife Action Plan. National Wild. So the first plan was formulated in 1983. It was later revised
in 2002, and so NWAP 2002 to 2016. So what it does is it provides the national strategy, policy framework is created by it, and the conservation priorities. Okay, okay, the priorities are set by the National Wildlife Action Plan, and you also have to remember the latest plan, India's National Wildlife Action Plan 3. Presently, you have the third version of NWAP. So the year you have to remember from 2017 to 2031. Okay. And it focuses upon what? It focuses upon landscape based approach. Focuses upon landscape based approach. You have to remember this along with the year. Very, very important. Okay. Next is we'll be covering up the protected area networks. So we have a three-tier system. We have a three-tier system. One is your national park. So national park focuses, it has the focus is ecosystem is the focus. And the main thing here is कि यहाँ पे you have very strict legal protection. Very, very strict legal protection. Second is you have your wildlife sanctuary. So wildlife sanctuary is species focused, unlike national park, which focuses upon the entire ecosystem. Okay, so national park focuses upon ecosystem, whereas wildlife sanctuary focuses upon individual species. Okay, and moreover, you have limited human activity, though it is allowed in wildlife sanctuary, but it is not allowed in national park. You have much higher legal regulations in the national parks vis-a-vis considering your human activities. And third is your biosphere reserves. We'll be discussing all this in a great depth and detail in the upcoming sessions. So biosphere reserve, the idea is conservation, sustainable development, as well as research. So India's protected area network provides the legal as well as the ecological backbone for in situ conservation. Okay. So in situ मतलब क्या होता है? In situ is जहां पे species located है वहीं पे उसको we are aiming to conserve it. ठीक है, जैसे कि ये सारा आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, all this is associated with in situ conservation, है ना. ex situ कहाँ होता है? जैसे कि zoos have ex situ conservation. ex situ मतलब जहां पे species located है, you are moving them away from their natural habitats and placing them in certain protected spaces. So those are your zoos, and this is where you have your ex situ conservation. ठीक है, दोनों में I hope the difference is absolutely clear. So each tier serves a distinct purpose. The purpose of each of them, national park, wildlife sanctuary, biosphere, all of them is different, together covering a wide spectrum of conservation needs. So from strictly protected, pristine ecosystems to landscapes where communities and conservation coexist. So essentially, the idea here is when communities and conservation coexist, where will it coexist? I'm telling you well in advance. It is biosphere reserve. Okay, and pristine ecosystem will be protected much better through national parks. ठीक है, इनके बीच में differences will be covering them in much greater depth. आगे बढ़ते हैं. National parks. Now moving towards a very important discussion, which is national parks. So what are national parks? These are large protected ecosystems encompassing representative flora, fauna, along with the entire landscape. And this is what essentially the flora, fauna, and the landscape in its totality comprises of an ecosystem. तो जब हम ये बात कर रहे हैं flora, fauna, landscape in its totality, है ना? This is what comprises of an ecosystem. इसको environment में और detail में समझेंगे. So now अब यहाँ पे
where can the prelims question be asked? That the boundaries are fixed by law. Law के through boundaries fixed होती हैं और they cannot be altered without parliamentary approval. बिना parliamentary approval के there is no possibility of altering the boundaries. So you have an ecosystem orientation. The entire ecosystem receives that legal protection. Okay. So you don't have absolutely no biotic interferences permitted, except of course the buffer zone, the outer area. Within those boundaries of the national parks, no biotic interference. But what I mean by is human interference is not permitted within the legal, the sacrosanct boundaries, legal boundaries of the national parks. So अगर मैं यहाँ पे एक boundary create कर देता हूँ, let's say I have demarcated this as a national park, legal boundary. So humans are not allowed to encroach upon these areas, though they may work upon in the buffer zone. इसके बाहर you have a buffer zone. ठीक है, this is a buffer zone. There certain activities may be allowed, but they will be regulated, of course. It's not that any activity could be undertaken in the buffer zone, but within the precincts, within the boundaries of the national parks, absolutely almost nil biotic interference is allowed. Tourism, and to the surprise, tourism is allowed. Tourism is allowed, though under regulation. So if let's say UPSC wanted to create a statement, it would create a statement like this: that tourism is not allowed under any circumstances within the national parks. Then that will be an incorrect statement. Okay. So no grazing is generally permitted. No grazing. Okay, you have to remember this also. So size ranges from 0.04 to 3000 square kilometers. So it can be as small as 0.04 square kilometer to as large as 3000 square kilometers. Okay. And you will have scientific management and researches are conducted. Some of the best examples are your Corbett. You have your Corbett is in Uttarakhand. You have your Ranthambore National Park. This is in Rajasthan. Rajasthan. You have your Kanha National Park. Kaziranga, very, very important. This is in Assam. Okay. Bandipur. You have your Periyar National Park. This is in Kerala. Bandhavgarh. ठीक है. Abhi will be seeing the locations of each and every national park that is present in India. So, moreover, what you need to be absolutely clear is that national parks can be notified by state government. State government under which act? Under again WPA 1972, Wildlife Protection Act 1972. The reason by reason of its ecological, faunal, floral, or let's say geomorphological or even zoological association or importance. So because of all those reasons, they can be notified by the state government under this act. ये आपको have to remember this. ठीक है? Now this is needed for the purpose of protecting and propagating or even developing the wildlife that is present there. Okay. So you have to remember this. Moreover, we have already discussed that boundaries of national park are defined by law. This has been asked in your prelims. Okay. This has been asked in your prelims. And once I'll tell you one more added point, very important. Once the boundary is notified, national park की boundary notify हो गई है. अब if you want to alter, है ना, if you want to alter, change the boundary of the national park, then state government cannot do that except on the recommendation of नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. ये समझने की बात है. स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार नोटिफाई कर दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो
अगर उसे वापस चेंज करनी है बाउंड्री तो अब वो खुद से नहीं कर सकती, अब बात जा चुकी है। अब किसकी परमिशन चाहिए होगी? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ विच इज चेयर्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। और एक बार नोटिफाई होगी तो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन चाहिए होगी, किसकी? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एक दो फैक्ट और बता दे रहा हूँ। सो नेशनल, ये सब इतना क्यों हो रहा है, क्यों जरूरत है? बिकॉज नेशनल पार्क्स आर गिवन अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, विद वेरी हाई प्रोटेक्शन एज यू कैन सी हियर। No biotic interference. What does it mean? No biotic interference. It essentially means is that human activity human activity is greatly restricted over here. And that is why no biotic interference or no human activity is permitted. है ना, is permitted inside the national park. Obviously, you need the permission. If you want to do any human activity, then that needs special permission by whom? Chief Wildlife Warden. Chief Wildlife Warden. इसकी परमिशन चाहिए होगी, है ना, and that too associated with the conditions provided under WPA 1972. तब ही यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ की जा सकती है ना। एक बार तो ये प्रीलिम्स में एक बार ये वाली चीज पूछी गई थी, लॉ वाली चीज। एक बार और एक चीज पूछी गई थी कि लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज बायोमास इन नेशनल पार्क। ये बिल्कुल सही चीज है। लोकल पीपल, वहां पे जो लोग हैं, दे आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज बायोमास इन नेशनल पार्क। ग्रेजिंग भी नहीं अलाउड है। ये तो एक अलग साल में ये भी फिर से प्रीलिम्स में ये भी चीज पूछी गई थी, ठीक। तो और अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोई रिमूव किया जाता है ना, फ्रॉम अ नेशनल पार्क, तो द सेम मे बी यूज्ड फॉर मीटिंग द पर्सनल बोनाफाइड नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द नेशनल पार्क एंड शेल नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हो। मतलब क्या है, अगर, है ना, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस नेशनल पार्क से निकाली जा रही है, तो वो सिर्फ एक ही काम में यूज होगी, है ना, जो वहां आसपास लोग रह रहे हैं इसके आउटर साइड में, सिर्फ उनके पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए वहां से कोई भी चीज निकाली जाएगी वो नहीं यूज होगी, ठीक। कोई भी ग्रेजिंग नहीं अलाउड होगी लाइफ स्टॉक की, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है डब्ल्यूपीए 1972 के अंदर नेशनल पार्क की बाउंड्री, नेशनल पार्क्स नोटिफाई कर सकती है। इवन, रिमेंबर दिस, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डू दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस कैन ऑल्सो डिक्लेयर एन एरिया, ठीक है। सो इट इज नॉट ओनली योर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनल पार्क अभी तक इस वक्त लगभग चल रहे हैं, यू हैव अराउंड 107 नेशनल पार्क्स हैं, रफली 107 108 होंगे, जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कहां पे हैं? इज इन मध्य प्रदेश। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। रफली अराउंड 11। दिस वाज आल्सो आस्क्ड वंस इन प्रीलिम्स, ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। सेकंड नंबर पे यू हैव आफ्टर एमपी, सेकंड नंबर पे यू हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। रफली अराउंड आई थिंक 9 national park as far as I can remember, and third is Assam. You don't need to remember that, just remember Madhya Pradesh and Andaman and Nicobar. Okay, moving on. So we will be seeing some of the important national parks, है ना। मैपिंग पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
इसके बारे में ग्रेट डेप्थ और डिटेल में भी हम जा सकते हैं, वो लेकिन एनवायरनमेंट की क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं. अभी वी विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन द डिमार्केशन पार्ट. सो यू हैव दच्चीगैम है ना, किश्तवाड़ और हेमिस. दिस इज, है ना, दच्चीगैम इज इन जम्मू एंड कश्मीर, हेमिस इज इन लद्दाख. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इन हिमाचल प्रदेश. ठीक. गोविंद पशु विहार, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर्स. राजा जी, with time you will be remembering this. Raja ji is obviously associated with Uttarakhand. Corbett पता ही रहेगा. नंदा देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंदा देवी इज ऑल्सो इन उत्तराखंड. ठीक है, ध्यान रखिएगा. कॉर्बेट तो ध्यान होगा ही होगा. कंचनजंगा, इसमें 3 स्टार मार्क कर दे रहा हूं, इसको तो प्लीज नेवर एवर फॉरगेट. कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन सिक्किम. ठीक है. देन यू हैव हियर, यू हैव नामडाफा, 2 स्टार्स. दिस इज इन अरुणाचल. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव डिब्रू साइखोवा. ठीक. There is an Assam. You have your Kaziranga. Gradually, you'll always be remembering this Kaziranga. Take associated with which river? We have already discussed this. Associated with Brahmaputra river. This is in Assam. Then you have your Intanki Kebul Lamjao. Very, 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 very important with regards to UPSC. Manipur. Asked multiple times in UPSC. Kebul Lamjao. ठीक है. Apart from that, you have your Palamau, which is in Jharkhand, Hazaribagh, Sundarbans. With time, obviously, you'll be remembering this. No need to focus much upon it. Simlipal, very, very important. Simlipal, this is in Odisha. This is in Odisha. Important. Simlipal is important. Moreover, you have your Indravati is in Chhattisgarh, Kankad Valley, Ikshwakar, है ना, डेजर्ट नेशनल पार्क, ऑब्वियसली विद द नेम, डोंट कंफ्यूज इट विद कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, कोल्ड डेजर्ट सेपरेट थिंग एंड डेजर्ट नेशनल पार्क इज इन राजस्थान. रणथंबोर, है ना, दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट विद टाइम यू विल बी रिमेंबरिंग दिस. देन इन India, then in Madhya Pradesh, you have maximum number of national parks. So some of them, you have your Madhav, you have your Panna, Bandhavgarh. ठीक. You have your Satpura. Pench has been asked. Pench is important. One Vihar. ठीक है. So these are some of the important national parks of MP. Please, है ना, keep a note of few of these, 2 or 3 at least, of the national parks from MP. Then you have your Sanjay Gandhi National Park. This is around Mumbai region. ठीक है. Chandoli, Molen. Molen is associated with Goa. ठीक है. You have your Nagarhole. This is in Karnataka. Okay. Then you have Pench, we have already discussed. Tadoba Andheri Tiger Reserve. This is in Maharashtra. Tadoba Andheri. ठीक है. Ikshwaka. Then Banarghatta. Banarghatta is in Karnataka. Guindi. Guindi is in Tamil Nadu. Bandipur is very, very important. Bandipur. Silent Valley, very, very, very important. ठीक है, Silent Valley. Then you have this Manna. Don't forget Manna. And after this, don't you ever forget the national, that there are also high number of national parks in Andaman and Nicobar Islands. So you have Button, you have your Mount Harriet, Saddle Peak. ठीक है. You have your Campbell. So these are some of these things that you can at least read some of these national parks. These are important. Okay. So moving forward, next is your wildlife sanctuaries. Very, very important wildlife sanctuaries. Okay. So these are protected areas primarily established for conserving specific wildlife species. So unlike national parks, which are aimed to protect the entire ecosystem, these are aiming for particular wildlife species along with their habitats.
Okay, so these are species oriented. So management focuses on targeted species rather than entire ecosystem. So this is where your difference lies between your national park and wildlife sanctuary. Be absolutely clear in this. So here also the human activities are permitted, but those are limited. Even though they are limited, they are permitted. ठीक है? Grazing may be regulated. It is not an outright ban on grazing, unlike national. So this is another difference between national. So these all are actually differences. First, second, third, all these are the difference. And you have to be absolutely clear with the difference between national park and wildlife sanctuary. So entry is only with permission, obviously. Hunting is obviously prohibited except under special governmental approval. Till then, your hunting is prohibited. Okay. So roads and buildings are regulated, but they may be constructed. Unlike in a national park, है ना? देखा था national park में all such activities were prohibited. Here they may be constructed. ठीक है? Boundaries are not fully sacrosanct and can be altered more easily than national parks. ठीक? So size ranges from 0.61 to 7,000 square kilometer, though you don't need to remember this figure, and even for the national park, a wildlife sanctuary can be upgraded to national park over time. This has happened. But whenever this transition happens, this becomes your news article, because while doing this transition, what you witness is a lot of protest. A lot of protest happens by the local people. A lot of protest happens. And this is why this becomes a news, and this is why this becomes very important for your civil services exam. Okay? So essentially any area other than the area comprised with any reserve forest or territorial waters. So any area other than the area comprised with any reserve forest or the territorial water can be notified by whom? Can be notified by state government as a wildlife sanctuary. Okay, so notification is done by state government under which act? Again, your Wildlife Protection Act of 1972 to constitute a wildlife sanctuary if such area is of adequate ecological importance, it is of adequate faunal importance, floral importance, geomorphological, natural, or even zoological significance. है ना? So the entire idea is purpose is protection, protecting, propagating, or developing wildlife or its environment. So some grazing activities, some restricted human activities are even allowed in wildlife sanctuary. जैसे कि you have your livestock grazing, that is allowed, that may be allowed in wildlife sanctuary, unlike national park where you have an outright ban on all such activities. So central government also under certain conditions declare an area to be wildlife sanctuary. So it is again just like national parks, even central government here also can notify an area as a wildlife sanctuary, though under limited certain conditions. Okay, so in this case, when the notification is done by central government, the powers and duties of chief wildlife warden and shall be exercised and discharged by director or any other authority which is provisioned by the central government. So if it is notified by state government, if it is notified by the state government, then the powers and duties are exercised by chief wildlife warden. Okay, but if it is notified by central government, then then all such power lies with the director or any other authority. Okay, not necessarily chief wildlife warden. So all activities, various activities are allowed in wildlife sanctuaries. Like you have your photography. Photography is allowed. You have your scientific research. Scientific research is allowed. Tourism is allowed.
ठीक है, tourism is allowed within the wildlife sanctuary, though with prior approval of whom? Prior approval of chief wildlife warden, or if it is notified by central government, then you require permission of director. Okay, so I hope the difference is absolutely clear. Okay, if you have any doubts, please do mention them in the comment section. So all livestock in and around the wildlife sanctuary region should be properly immunized. Okay, so wildlife sanctuaries are established to protect particular species of animals, while let's say tiger reserves are governed by the umbrella species. So you had the, we have already discussed, हमने क्या discuss किया है? Tiger reserve. Tiger reserves are governed by which concept? Umbrella species. Umbrella species concept, as in, since you are protecting tiger and its habitat, so indirectly you are also protecting the fauna and flora and the landscape associated with the tiger reserve. So this is an umbrella species concept of conservation management. Okay, where the top predator, in this case the tiger, है ना, it is the umbrella species. Okay, I hope the difference is clear. Wildlife sanctuaries are centered around the protection of a particular species, whereas national parks include the protection of more than one species. Okay, so wildlife sanctuary at present, if I'm remembering it correctly, it is somewhere around 500, more than 570. I think 573. And which state or union territory has the highest number of wildlife sanctuary? So you have Andaman and Nicobar Island. Andaman and Nicobar. This was asked in your exam once. So you have to remember this also. Andaman and Nicobar Island has maximum number of wildlife sanctuary. आगे बढ़ते हैं. So here we will be seeing some of the important. Dachigam is a national park as well as wildlife sanctuary. So when we say some of these things, it is a national park as well as wildlife sanctuary. What it means is you have a larger area of wildlife sanctuary. Within it, you have a core area which is your national park. Okay? And the rest of the differences remain the same. Like it is created by law, whereas this, it can be altered. The boundaries of wildlife sanctuary can be altered easily. National park protects the entire ecosystem. Wildlife sanctuary protects a certain species. Okay. Human activities are generally prohibited inside the national park, whereas tourism, photography, grazing, all this is allowed in your wildlife sanctuary. Okay. So these are some of the differences that you have to be cautious about. Okay. So you have your Hemis, you have your Great Himalayas, Govind Sagar, Shikhar Devi. Shikhar Devi is in Uttarakhand. Okay, Rajaji Corbett. Okay, you have your Dudhwa Wildlife Sanctuary. This is in Uttar Pradesh. Okay, you have your Moling Nandang. Okay, Kanchenjunga. We are well aware of Kaziranga. In Tanki, Cable Lamjau. And Manas Wildlife Sanctuary. This is in Assam. Important. And this is also a tiger reserve. Nokrek is very, very important. Nokrek is in Meghalaya. Nokrek has been asked once. Meghalaya. Okay. Rajgir, obviously, with the name suggests Bihar. And Gautam Buddha. And Hazaribagh. Hazaribagh is in Jharkhand. Kaimur. This is in Bihar. And you have your National Chambal Wildlife Sanctuary. Important. Very important. Why important? Because it is at tri-junction, not just two states. It is at tri-junction. Tri-junction, three states. Which all three states? You have your Madhya Pradesh, you have your Rajasthan, you have your Rajasthan, you have your Madhya Pradesh and regions of Uttar Pradesh. Okay? So tri-junction makes it very, very important. National Chambal Wildlife Sanctuary. Okay. Then you have Abohar Sultanpur. Sultanpur, this is in Haryana. Sultanpur Wildlife Sanctuary. ठीक है. Tal Chaper, you have your Desert Wildlife Sanctuary, Ranthambore, Mount Abu, as the name suggests, Mount Abu, very, very famous point. है ना?
It is situated at Guru Shikhar, the highest point of Aravallis. Nal Sarovar, very important. This is in Nal Sarovar. This is in Gujarat. Wild Ass Sanctuary. There was a question on wild ass. ठीक है. Velodав Wildlife Sanctuary, Gir Wildlife Sanctuary. This is famous for. We have already discussed this. Famous for lions. ठीक. And then in Madhya Pradesh, n number of wildlife sanctuaries like your Madhav, Panna, Van Vihar, Bori, Pench, Bandhavgarh. Okay. So these are some of your Male Ghat. Male Ghat is a wildlife sanctuary as well as a tiger reserve. Tadoba Andheri Tiger Reserve. This is also in Maharashtra. You have a Sanjay Gandhi. We have already covered this. Okay. Kolleru, very, very, very important because of the lake. Okay. When we will be discussing lake separately, we'll be covering it again. So it's a wildlife sanctuary. And then here, Sundarban, everyone knows. You have Simlipal, Odisha, Ushkoti, Bhitar Kanika. Bhitar Kanika and Chilka Lake. Please don't forget this. This is associated with Odisha. Bhitar Kanika is associated with which turtles? Your olive ridley turtles. The IUCN status of olive ridley turtles vulnerable. Olive ridley turtles and the process of mass nesting, which is referred as Arivadas. This is undertaken near Bhitar Kanika Wildlife Sanctuary as well as a national park. Okay. You have your Nagarjuna Sagar, you have your Pulikat, very, very important. It's a lake, Pulikat Lake. Gindi, Vedantangal, Mundamalai, Calimere, Point Calimere. Okay. You have your Marine Wildlife Sanctuary, Mundan Thurai. Okay. Periya, this is in Kerala. Eraviculam, very important. This is in Kerala. Annamalai, Wayanad. You have your Bandipur, Nagarhole, Kudremukh, Anshi. All these are in your Karnataka. This is in your Karnataka. So you can keep on revisiting the map so that you are better able to recall all of them. Okay. Next is your Biosphere Reserve. So we this is a long discussion. We'll be covering this in our next session, Biosphere Reserve. Okay. So keep on revising, and if you have any doubts with regards to any of the topic which we have discussed or which we will be discussing, or any doubt, you have complete freedom. So please do drop a message in the comment section. And if you'd like to give any feedback also, please do mention it in the comment section. Okay, then we'll meet in the next session. Okay, till then, keep revising. Jai Hind.